The Waqf Amendment Bill has been passed in the Rajya Sabha after it was passed in the Lok Sabha the day earlier. Now, the voting was 128 votes in favour of the bill, with 95 against. The arguments were on expected lines as Minorities Affairs Minister Kiren Rijiju dismissed the allegations that the bill would harm the Muslim interests and asserted that non-Muslims cannot interfere in the Waqf Board's affairs, as its management, creation and beneficiaries would remain exclusively for Muslims. Meanwhile, Union Minister J.P. Nadda accused the opposition of attempting to divert and derail the issue, while Congress's Mallikarjun Kharge said the bill would sow the seeds for dispute. Let's listen in to the reactions coming in. जो हमने रिकमेंडेशन दिया, अमेंडमेंट दिया, उसको सरकार ने स्वीकार किया। आज उस जेपीसी के लिए हमारे लिए कितना संतोष का विषय है, क्योंकि निश्चित तौर से शायद इतिहास में पहली बार होगा कि इस जेपीसी के एक्सरसाइज करने के बाद उसकी सभी रिकमेंडेशंस को सरकार ने स्वीकार किया। तो ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो स्पीकर साहब ने एक बनाया था जेपीसी कमेटी, ये एक तरह से पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को मजबूत करने वाला है। You can see the division in the country, even in terms of the numbers, because there are substantial numbers which have opposed the bill. So this will have political implications, and especially in respect of political parties who have given the support to the BJP, because there's an election in Bihar coming. And of course it makes very little difference to the TDP because their elections are far away. But at least historically, they will be remembered for having supported the bill. कोई इसमें ज़बरदस्त समर्थन नहीं है। ये जानबूझकर अपने बहुमत का दुरुपयोग करके जोर ज़बरदस्ती से गणतांत्रिक तरीके से नहीं, ये डाला गया है, थोपा गया है। ये बहुत हद तक जो स्वायत्त है, ऑटोनॉमी है, अधिकार क्षेत्र है, अपने खुद के संस्थाओं को स्वचालित करने का मुस्लिम समुदाय में, उसको ये हनन करता है, ले लेता है, नष्ट कर देता है। इसलिए मैं इसको संवैधानिक मानता हूँ और ये दुराव करेगा, ये आपसी वैमनस्य करेगा, अविश्वास करेगा, इसलिए मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ। This is a black day of the Indian secular, the secular India, the history of secular India, like 1992, December 6th, Babri Masjid demolition day. Like that, it's a black spot of the Indian secular India. So anyway, this is absolutely an unconstitutional legislation. So I strongly believe that, I do believe that it would be challenged before the court.